Oh, I'm so sorry. I spoke a lot, but it was muted. I just saw it now. So, hi everyone, welcome here. I would like to apologize because we scheduled this interview or interaction regarding the Akasa interview, where we are going to discuss all the questions, the query you have, and due to some reason and the problem which were unavoidable and circumstances were like that, so we weren't able to do it yesterday. Today we are going to do it, and I welcome you here. Hi, I am Vanshika Singh. I'm a ex cabin crew with Indigo, and right now working as a chief operating officer at Millennium Aviation Academy. Good to see you here, everyone. I hope my voice are clear right now. I can see some messages here. Ma'am, आवाज नहीं आ रही है. I hope right now I'm audible to you. Okay. So, shall we wait a little to start the interaction so that more people would join us, or shall we start it right now? Because I can just see seven people are here and rest are not here. So, as you say, okay, I need a thumbs up or just a, a sign to me so that I can assure and I can get confirmed that what we need to do again or ahead of this. Okay, so I believe we should start it because it's already 8 o'clock, and I have lots of questions here, lots of questions here, which I'm going to discuss with you. I will mention some questions for you. I would suggest you how to answer these questions because I will not suggest you the answer, the frame, the sentence frame, everything, but I will suggest you the idea of answering the question and the reason why this question is being asked to you. Because um, you as an individual person has to create your own way to answer any question that will make you the different out of all and odd out of all events. So yeah, we should start, I hope. Okay, so the first question would be, for any interviewer you're going, the first question from them would be for you will be your introduction. They are going to ask you, give me your introduction, or tell us about yourself. Tell me who is this girl seated in front of us, or tell me your story. These all defines the same. These all stands for the same. They just want to hear your story, your details, and the identification on which they are going to identify you and remember you, recall you, that yeah, this was the candidate, and she has these things, or he has these things. So, okay, this first question will be your introduction, obviously. And to your introduction, so I have an idea that for your introduction, you hardly get seconds of 40 seconds to complete your introduction. Okay, hardly 40 seconds. So, for that 40 seconds, you need to mention the things which are really important to the HR and which they really look forward to listen from you. So the first thing would be your name, obviously, and your age. If you want to, that would be optional to for you if you want to mention or not. So name, age, obviously your location you come from, and then your educational qualification. After mentioning your educational qualification, you should you should mention your strength and weaknesses. If you have strengths or weaknesses, strength or weakness, yes, these are the things you should mention. Now, when we give them their questions answer, like an introductions answer, so with your strength and with your weakness, they have another questions arising, which will be why this is your weakness and why this is your strength. So, and what do you understand by weakness and strength to you? So, for this aviation interview field, you should never, ever mention that your weakness is something which will harm them.
okay, which will harm the company's image or company's work culture or company's work pattern. So for any interview where they're going to ask you, where they're asking you that what is your weakness, you need to answer that your weaknesses are something personal to you and that will not harm the company's image or the work culture. I would suggest you some examples how you need to mention and what you need to mention in your weaknesses. So the first thing, or any of these things, you can mention either book reading. Okay, then you have to explain how come book reading would be a weakness to you. So you need to mention that overreading of book leads me to avoid my other routine, including my food, getting freshen up, or reading anything else, or studying anything else, and giving time to my family. So if you're picking that overreading your book will be your weakness, so that will not harm the company. You're getting my point? So you have to mention such things, either overeating, overreading. Sometimes you can mention exercises, because you can add that exercises, when you love exercises and you're too much into that, that you don't realize that you have taken a lots of time to do that and you are not organizing rest of the things. So yes, anything you can mention, but not that you're emotional, or you get broken when someone speaks louder than you, or anyone who is shouting on you, you feel threatened or scared. You cannot mention these things, which will represent your image as a weak contestant or a weak candidate, because this field will give you thousands and thousands of things as a benefits and as a facilities, but this field will ask you 700 to 800 things back. Okay, because they are giving you a lot, so they will be asking you for so many things, like managing all the things on board and at your place. You need to manage your time, you need to manage your diet, you need to manage your health, you need to manage your emotions. Yes, obviously, because the field you have chosen, uh, here people are diverse. They come from a diverse culture, diverse emotion, diverse places, and obviously the languages. So always this situation arising in this field will lead you to any emotion, either it is happy, sad, crying, or mixed emotion, where you don't know how to react and what to react because you're new to this field. Okay, everything is fine. It just you don't have to let them know that yes, you are emotionally weak, yet you are working on that, but you don't need to mention it. Okay, because if you're working, that will get better with the experience, with the learning. You will make mistakes, and that is your right to do it. Being a human, you have your right to do mistakes. The more the mistakes are, the more you're going to learn. Okay, and we have wrapped the first question, which is introduction. Give me your introduction, or tell us about you, your story. Give me a brief introduction, anything. Now we are moving forward to another question, which would be, mm, you want GD topic questions separately, or here like continuously mixed questions should be coming, और एक पैरामीटर्स सेट करके चलते हैं कि पहले हम इंट्रोडक्शन फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन सेटल करते हैं, फिर सेकंड राउंड, फिर थर्ड राउंड. व्हाट डू यू वांट? लेट्स डू इंटरेक्शन, बिकॉज अगर मैं सिर्फ बोलते रहूंगी तो वो बहुत बोरिंग हो जाएगा. लेट्स इंटरेक्ट अ बिट. हाय एवरीवन. Yes, I can see some questions. Please go ahead if you have any question, any query, doubt. Um, One thing which I would like to share with you, which is a personal experience I am experiencing from last 2 to 3 months. Whenever the candidate and with their parents they came, or they come for the interaction or the counseling, they tend to ask one question, ma'am, is everything fine with this industry if I'm a married girl or a woman? If I have a kid, can I work in this industry? Is swimming important to this industry? Or what else? Yeah.
The color complex is important to this industry. So I don't know how to answer why these myths are available in the market, and why people are diverting people and miscommunicating with them and misguiding them to this industry and to this industry's criteria. None of these are applicable. None of these are asked during the question, during the interaction, or during the interview. Company does not see your color. They will be looking forward for your experience, your learning, your talent, your skills. Because on board or after joining the company cannot recognize you with your name or your face. They only know you on the performance. Okay, work report, जो आपकी डेली वर्क रिपोर्ट कंपनी पे सबमिट होती है, that how you behaved with the passenger, you received a feedback, you received a compliment, those reports are only known to the company, and company is knowing you just because of the report, because you're getting the report because of your work. So yes, your work is hell important for this company, but not your color, neither your marriage status. Okay. No, these are not important. So please don't get confused and don't get misled by anyone. I request you. I have been to this industry. I've seen lots of crew who are mother. They have babies. So cute to see them and so inspiring to see them there working, balancing both the lives, their personal and the professional, obviously. So yes, if you're married or unmarried, most welcome to this field. Just some criteria to be fulfilled, which will be demanded by any company who is working with this industry. Okay, and the criteria are just very known to you. Only some of the criteria I'm going to mention with you is height, your age, your qualification, no scar, tattoo, or burn mark on your face, hand, and leg. These are the things which are required to apply as a cabin crew. Okay, I hope I have made this clear to you, because these were the things which were really disturbing me when guardian were asking that, ma'am, ये थोड़ी से कलर में वैसे हैं तो इनका हो जाएगा. I really feel bad. We are Indian people. We are Indian, and our skin tone has right to be the way they are. We are not समथिंग एल्स. ओके, हम इंडियन हैं, हमारा हक है, जो कलर हमें मिला है वो हमारा ही है. जो हमें अपने ही देश में काम करने के लिए, अपने ही देश के एयरलाइन के साथ काम करने के लिए किसी दूसरे कलर का ज़रूरत नहीं है. आपका कंपनी आपको आपके काम से जानेगा, आपके रंग रूप से नहीं, आपके व्यवहार और काम से. ठीक है? सो किसी से भी मैनिपुलेट मत होइए, किसी से भी आप इन्फ्लुएंस मत होइए जल्दी से. आपको कुछ भी डाउट लगता है, आपके पास फ़ोन है, आज के टाइम पे एआई है, गो एंड सर्च देयर. वो आपको ज़्यादा सही इन्फॉर्मेशन देंगे, रादर दैन कुछ लोग जो इस इंडस्ट्री में रहते हुए भी बाहर के लोग जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनको मिसलीड करते हैं. आई नो, जितना मुझसे हो सकेगा, ये शायद मेरा हमारा पहला इंटरेक्शन है, जितना मुझसे हो पाएगा आई विल बी देयर फॉर यू टू गाइड. अम, आपको कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, हमारे यूट्यूब पेज से कनेक्टेड रहिए. कुछ भी हो, यू कैन टेक्स्ट अस, यू कैन कमेंट बिलो. वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू आंसर यू विद अ वीडियो इफ रिक्वायर्ड, और with the text or call, however way you want us to connect with you. Okay, so kindly follow our social media pages. We will be connected with you. Any assistance required, I am there for you. I cannot see my people कहीं और जाते हुए और कहीं और डाइवर्ट होते हुए, ठीक है, मिसलीड होते हुए. चलो, come back to the question answer game. Okay, so some of the questions I have. Okay, just give me a sec. हाँ जी, मिल गया क्वेश्चन का पिटारा. लेट्स डिस्कस इट नाउ. ओके, सो पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू मैनेज रोटेशनल शिफ्ट. ठीक है, सो मैं बताती हूँ. रोटेशनल शिफ्ट का मतलब कभी भी आपको बुला लेंगे, वो दिन हो रात हो, डजेंट मैटर. आप आज रात की फ्लाइट कर रहे हो, कल आप दिन की फ्लाइट कर रहे हो, दोपहर की फ्लाइट कर रहे हो,
तो वो हो गया आपका कोई भी शेड्यूल टाइम पीरियड आपके पास नहीं है, डिपेंडिंग एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्लाइट्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी आपको वहाँ पे अवेलेबल होना पड़ेगा। तो इसको आप कैसे मैनेज करोगे? क्योंकि आज तक तो आप फ्रेशर थे और आपके पास दिन का समय है तो दिन में काम और पढ़ाई करना है और रात में खाना-पीना खाकर सोना है। तो ये आपका शिफ्ट होता था नॉर्मली, नॉर्मल रूटीन में। अब आप जब इस इंडस्ट्री से जुड़ोगे तो आप अपने रूटीन को कैसे चेंज करोगे और इस इंडस्ट्री में अडैप्ट करोगे? तो देखो, अगर इस इंडस्ट्री में जा रहे हो तो आपको भी पता है कि आपको कैसे काम मिलेंगे, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ठीक है? तो मेंटली प्रिपेयर्ड तो आप ऑलरेडी हो। हाउएवर जब भी वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ये तब आप ब्लैंक हो जाओगे। ब्लैंक हो जाओगे बिकॉज़ आपको लगेगा इसका क्या ही आंसर दें कि येस आई एम रेडी टू डू इट, मैं मैनेज कर लूँगी, बट कैसे कर लूँगी? यस, आप कर लोगे बिकॉज़ आज तक आप मैनेज करते आए हो। आप पहले बच्चे थे, आपको सारी चीज़ें करके मिलती थी, तो आप उस चीज़ को अडॉप्ट किए। अब आप धीरे-धीरे बड़े हुए, अब आपको खुद से चीज़ें करनी है, आपको करके नहीं मिलती है, तो आपने उसको भी अडॉप्ट किया। सो बीइंग ए ह्यूमन बीइंग हमारा नेचर है अडॉप्ट करना चीज़ों को, चाहे वो सोसाइटी हो, नेचर हो, स्किन हो, फूड हो, हर चीज़ को हम डाइजेस्ट और अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है? उस वे में हम डिज़ाइन किए गए हैं। ऑब्वियसली जब आपको मौका मिलेगा, एनवायरनमेंट मिलेगा तो आप उसको सीख कर अपने अंदर ऐड करोगे, अगर वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। गॉट इट? सो इस तरीके से आपको उनको आंसर देना है। आप किसी भी क्वेश्चन का किसी भी इंटरव्यू में आंसर दे रहे हो, आपको उस क्वेश्चन में खुद को अज़्यूम करना है एंड देन आंसर करना है। क्योंकि आप फ्यूचर में काम करने वाले हो उस कंपनी के साथ एंड वही काम करने वाले हो, तभी कंपनी ने उस काम का क्वेश्चन आपसे अभी पूछा है कि आपकी प्लानिंग अभी से क्या है? क्योंकि आप कंपनी में जाओगे, आपको कंपनी ट्रेन करेगी, नो डाउट। बट कंपनी आपको रूटीन के लिए ट्रेन नहीं करेगी या फिर आप कैसे ज़िंदगी मैनेज करोगे उसके लिए ट्रेन नहीं करेगी। कंपनी आपको अपने कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेन करेगी। आप एयरक्राफ्ट कैसे सँभालोगे, पैसेंजर्स को कैसे सँभालोगे, उनके मेडिकल इश्यूज़ कैसे सँभालोगे। आप खुद को कैसे सँभालोगे दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो वो आपको प्रैक्टिस में लाना है और आपको उनको इंसिडेंट्स गिनवाने होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप फँसते हो, कोई भी क्वेश्चन अनप्रिपेयर्ड हो जाता है आपके लिए या फिर अनप्रेडिक्टेबल एकदम अचानक से आ जाए एंड यू आर ब्लैंक कि अब इसमें क्या बोलूँ? सो उन सारे क्वेश्चंस के लिए आप कोई भी इंसिडेंट अपने रियल लाइफ से उठाइए, कोई भी रिलेटिंग एग्जाम्पल, इंसिडेंट उसका हेल्प लेके क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। येस, बिकॉज़ यू आर अ फ्रेशर आपके पास राइट है कि आप इंसिडेंट्स और एग्जाम्पल्स का हेल्प लेकर आंसर करो। बिकॉज़ जब आप इंसिडेंट का हेल्प लेते हो, आपके लिए भी ईज़ी होता है कि आप क्या बोलना चाहते हो वो डिलीवर करना और सामने वाले के लिए भी आसान होता है उस चीज़ को अडैप्ट करके समझने का कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। ओके, क्योंकि आप फ्रेशर हो वो आपसे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको चांस नहीं मिला है एक्सप्लोर करने का काम के फील्ड में एज़ अ फ्रेशर। तो वो एज़ अ फ्रेशर भी उतना ही आंसर एक्सपेक्ट करते हैं जितना आप रियल लाइफ में अगर खुद को रखोगे और जो दोगे तो वो सैटिस्फाइड हो जाएँगे। नाउ आंसर आपको क्वेश्चन को अच्छे से सुन के करना है। मैं अपने क्लास के ट्रेनिंग में भी बच्चों को यही बोलती हूँ कि प्लीज़ लिसनिंग स्किल्स अच्छे कीजिए। लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छे होने ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। अगर आप क्वेश्चन को सुन रहे हो, आपका माइंड उस क्वेश्चन को सुनते के साथ आंसर प्रिपेयर कर लेता है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन सुन रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो क्वेश्चन सुनते के साथ, यानी क्वेश्चन भी सुन रहे हो और ये भी सोच रहे हो कि इसके बाद का क्वेश्चन क्या आएगा। तो फिर आपका माइंड 2 काम में डिवाइड होता है और एक पे फ़ोकस नहीं होने की वज़ह से आपके पास आंसर नहीं होता है उस करंट क्वेश्चन का। इस चीज़ को अवॉइड करने का एक ही सॉल्यूशन है, मत सोचो फ्यूचर के बारे में कि अगला क्वेश्चन क्या आएगा, नहीं आएगा। व्हाट इफ आप 2 क्वेश्चन में ही सिलेक्ट हो जाओ? आप जितने भी क्वेश्चन का आंसर दो, उसका आंसर आपको पता होना चाहिए और वो वैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको पता होता है। ठीक है? वो भी इंटरव्यूअर है, वो यमराज नहीं है, वहाँ पे बैठे नहीं आपको टॉर्चर करने के लिए। दे आल्सो वांट कि आप उनकी कंपनी के साथ जुड़ो और उनका ग्रोथ और उनकी कंपनी का ग्रोथ हो और आपका भी ग्रोथ हो। ठीक है? सो उनको अगर यमराज के तौर पे देखोगे तो आपको रिएक्शन और रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। टेक देम एज़ अ टीचर कि वो आपको गाइड करने आए हैं, वो आपको कुछ ना कुछ ट्रेनिंग देने आए हैं या तो लेसन देने आए हैं। क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर का है। क्वेश्चन क्या माँग रहा है? व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हाट क्या पूछ रहा है वो? एंड देन उसका आंसर दीजिए।
पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इसीलिए बोला मैंने क्योंकि आपके इंटरव्यू में हर क्वेश्चन आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर का होगा। जो क्वेश्चन अभी मैंने आपसे पूछा, दैट वाज हाउ विल यू मैनेज योर रोटेशनल शिफ्ट, दैट डिपेंड्स ऑन योर फ्यूचर प्लान, बिकॉज दे आर आस्किंग कि अगर आप कंपनी में सिलेक्ट हो जाते हो तो आप कैसे मैनेज करोगे। सो दैट इज फॉर योर फ्यूचर प्लान। सो यू नीड टू आंसर विथ विल। सिंपल। कोई भी टेंसेस में आप बात कर रहे हो या कोई भी टेंसेस के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हों, उसको कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा। पहले आई वुड नॉट से डायरेक्ट कमेंट लाइक दिस, बट पहले कम्युनिकेशन वैलिडेशन नहीं था, ध्यान नहीं दिए जाते थे, बट नाउ अडेज इट्स